Dear students, today I will give you the explanation of the third poem of the flamenco textbook, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. In the first video, I give you a detailed account of the poet, and in the second video, I give you the summary of the poem. Now, the poem is as: Now we will count to 12, and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will. This was a recitation of the whole poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Now let us begin stanza-wise explanation of the poem. The stanza 1 is: Now we will count to 12, and we will all keep still. For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. Now we will count to 12, and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. This is stanza 1, and I will now give you the explanation. The poet here requests everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. Maybe this 12 referred to by the poet is the 12 hours in the clock or the 12 months in a year. He wants everyone to stop and calm down. The poet urges everyone not to speak any language. As we all know that there are different languages spoken in different parts of the earth which sometimes become a barrier in our way for peace. So he asks people not to speak. Not only this, but he also wants us to stop moving our arms. By using the word arms, he means the weapons which are used by different countries to raise a war against each other. So basically, the poet is demanding peace from all of us. So यह जो पोइट है ये हमें रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है कि हम में से हर एक 12 तक गिने अपने, लेकिन वो ये गिनना हमें अपने जहन में है और थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, ठहर जाना है. शायद इस 12 का मतलब घड़ी के 12 घंटे हो सकते हैं या ये 1 साल के 12 महीने भी हो सकते हैं. वो हमें से हर एक को चाहता है, वो हर एक से चाहता है कि हम रुक जाएं और सुकून से बैठ जाएं. ये हमें पोइट हमें ज़ोर देता है कि हम में से कोई भी किसी भी ज़बान में बात न करे, क्योंकि हम जानते हैं कि
दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं और ये कभी कभी रुकावट बन जाती हैं अमन की अमन के रास्ते में, पीस के रास्ते में। लिहाजा वो हमें बोलता है, हमें बताता है कि हम में से कोई भी ना बोल पाए। इतना ही नहीं, पोइट हमें ये भी चाहता है, हमसे ये भी चाहता है कि हम अपने आर्म्स रोकें। आर्म्स से मतलब हथियार होते हैं। अब ना सेकंड स्टेंजा, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Huh? Poet says that it would be a rare situation when there will be no engines working. यानी अगर इंजन रुक जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो एक अजीब हालत बन जाएगी. Here he wants to say that if everything comes to a standstill, it will be a very different moment. यानी वो चाहता है कि अगर हम हर एक, ये कहना चाहता है कि अगर हम में से हर एक रुक जाएगा, ठहर जाएगा, तो एक नया ही लम्हा बन जाएगा. If all the engines like the vehicles and machines stop, there will be a sudden strange situation as the world will experience a sudden calmness. एक अचानक खामोशी छा जाएगी जब हर एक इंजन यानी हर एक जो गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं, जो मशीनें चलती हैं, वो सब रुक जाएं, ठहर जाएं. People will not be in a rush to achieve material things one after another. और लोग जो दुनियावी माल दौलत के पीछे भाग रहे हैं, तो ये रेस ख़त्म हो जाएगी. Further, the poet says that the fishermen will also stop and not harm in the whales. इतना ही नहीं, जो समंदर में मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो भी रुक जाएंगे और किसी व्हेल को समंदर में तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे. This means that the poet is urging everyone not to harm the animals. तो इस तरह एनिमल्स या हैवानों के साथ भी हम कोई हैवानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे. Here he gives the example of whales which are being hunted for the purpose of food or trade. He also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost. तो हम सोचेंगे जब हम रुक जाएंगे कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है. For this he gives the example of the man who gathers salt whose hands are hurt. Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things. तो यहाँ एक और एग्जांपल देते हैं उस आदमी की जो समंदर में नमक जमा करता है और उसके हाथ ये नमक जमा करते करते ज़ख्मी हो जाते हैं. या पोइट हर एक से हमें चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं ताकि हम ये देख सकें और महसूस कर सकें कि हमने इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में क्या हासिल किया है और हमने इन दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हुए क्या कुछ खोया है. यानी जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, तो वो हम कर सकें, हम सोच विचार कर सकें कि हमने इस दुनिया में आके क्या खोया है, क्या पाया है, किस इंसान को या किस जानवर को, किस चीज़ को हमने तकलीफ़ दी है और क्या हम यहाँ इस दुनिया में एक दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए, जानवरों को तकलीफ़ देने के लिए आए हैं या हमारा यहाँ आने का मकसद कुछ और है. तो जो पोइट है ये हमसे यही चाहता है. Here he wants everyone to stop for a while in order to see and feel their achievements. And with this we complete today's topic. Thank you.